So yesterday what we have done, just right, let me try to revise it once. We started with introduction of transistors. I told you the transistor is a bijunctional transistor which is mostly used and it is made up of your two p-n junctions, isn't it? Or it consists of three regions. Beta, what are the three regions? One is your emitter, एक को बोलते हैं अपन emitter, और एक को बोलते हैं अपन base. One is your emitter, another one is your base, and third one is your collector. Emitter is heavily doped beta and medium thickness है. Base is highly doped but very thin region. Collector is moderately doped but thickest region. तो ये इसका साइन कन्वेंशन से बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो ये हो गया था. उसके बाद हम लोग ने इनपुट जंक्शन कभी भी कौन सा रहना चाहिए? बेस एमिटर होना चाहिए. बेस एमिटर कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस होगा. और बेस कलेक्टर आउटपुट जो होता है ना, दैट शुड बी ऑलवेज इन द रिवर्स बायस. ये करने का तरीका है. बेस करंट कितना होता है बेटा? 2 to 3% ऑफ एमिटर करंट होता है और कलेक्टर करंट 97 to 98% ऑफ एमिटर करंट होता है. और ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है बेटा. एमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर बेस करंट इन प्लेस ऑफ योर कलेक्टर करंट. ठीक है ना? चलिए, लेट अस ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट वन बेटा. नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए. सो लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांजिस्टर्स के कॉन्फ़िगरेशन. ट्रांजिस्टर configuration and characteristics. ठीक है. सो ट्रांजिस्टर्स का हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो ट्रांजिस्टर्स में पीएन जंक्शन ड्रॉ करने का तरीका तो सभी को मालूम हो गया. ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए. कौन सा बेटा? एमिटर और बेस. कलेक्टर और बेस शुड ऑलवेज बी इन द रिवर्स बायस. ठीक है ना. उसके हिसाब से अपन को ड्रा करना है. कॉन्फ़िगरेशंस कौन से देखे बेटा अपने सिलेबस में? Configurations are number 1. First one is common emitter configuration. ठीक है ना. इसको हम लोग CE बोलते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. और नेक्स्ट वन इज योर कॉमन बेस. कॉमन बेस यानी बेस विल बी कॉमन फॉर द एमिटर एंड कलेक्टर. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं CB. और थर्ड वाला होता है कॉमन कलेक्टर. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मतलब CC. ठीक है ना. So let us try to talk about the first one, that is common emitter NPN transistor. So we are talking about your common emitter NPN transistor. Okay, so let me talk about its characteristics. Emitter is common. So basic junction, how do you represent it right now? Okay. So we're talking about your N, this is your P, and this is your N. Okay, so this is your emitter. Okay, and here there is an ammeter which measures the currents in microamperes. This is positive terminal, this is negative terminal. So this is the base current. Okay, emitter is common to the base and emitter is common to your collector. So this one is collector, this one is base, this one is emitter. See this one. This is common for this one.
emitter is common to the base and emitter is common to the collector. Got it? What an idea? So from here to here, if I am taking, this will be equal to how much better? Base. Emitter is common to the base. So here it is your base and emitter. If I'm talking about this two right now, this one is your emitter and collector. See, emitter is common for both of them, collector and as well as of your base. Rafly draw कर रहा हूँ मैं, डिटेल में भी आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ. You know that फॉरवर्ड बायस में emitter और क्या कलेक्टर क्या बोलते बेस होने चाहिए. तो अगर मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ, सर्किट डायग्राम एज पर एनसीईआरटी, ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर एक बैटरी होती है. This is your base and your emitter, and here there is your ammeter which is used to measure the current, जो माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना? So this is the resistance and this one is your VBB and it is variable and this is some resistance. मान के चलो this resistance is your R2. So there is a flow of your current right now from this one, और यहाँ पर अपना junction diode होगा. Here this will be your positive, this will be your symbolic representation. ठीक है ना? So यहाँ पर इसको ऐसा कनेक्ट कर दे और इसको अर्थिंग कर दे. दिस इज सिंपल फॉर योर अर्थिंग. और ये कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर यहाँ पर होगा और यहाँ पर एक अमीटर होगा जो मिली एम्पियर्स में करंट मेजर करेगा, और यहाँ पर से करंट जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग एक पोटेंशियल लगाएंगे इसके अक्रॉस. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल मेजर करेगा, दैट पोटेंशियल विल बी योर VCE वोल्टेज. ये बेस हो जाएगा राइट नाउ. दिस वन इज योर बेस, दिस वन इज एमिटर, दिस वन इज कलेक्टर, और इसके अक्रॉस हम लोग एक आउटपुट पोटेंशियल लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा VCC, और ये भी वेरिएबल होगा. और यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, मान के चलो ये हो गया R1. और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बताओ बेटा. ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर. ठीक है ना? सो देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट फ्रॉम हियर. ये हो गया कलेक्टर करंट IC, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है. देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट, तो देयर इज अ करंट. यहाँ से होता है करंट यहाँ पर आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू योर एमिटर करंट, यानी बेस करंट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा. सो दिस विल बी योर बेस करंट. बेस करंट और कलेक्टर करंट मिलके एमिटर में जा रहे हैं बेसिकली. ठीक है ना? तो एमिटर और बेस फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, isn't it? ये कौन सा जंक्शन है बेटा? PNP. ठीक है? See, this P is connected to negative, isn't it? Another one is connected to your positive, isn't it? ये नहीं आएगा, PNP बोलो तो नहीं आएगा, NPN ले लेते हैं इसको, तो ही अपने को डायग्राम सेट होगा. स्टॉप हो रहा है. ये अपन ले लेते हैं N, ये ले लेते हैं P, और ये ले लेते हैं N. So P is connected to positive and this is connected to your negative, तो फॉरवर्ड बायस हो गया. और N is connected to your positive and this N is connected to your negative, तो ये हो गया रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस. ठीक है ना? कलेक्टर करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर्स एंड बेस करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर्स. ये रखना है बेटा. तो इनपुट क्या है देखिए यहाँ पर, इनपुट के पास बेस एमिटर है, isn't it? फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट में जो है ना कलेक्टर एमिटर है विच इज इन रिवर्स बायस. इस रीजन को हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं. दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ व्हाट? एक्टिव रीजन. सो दिस आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस. कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त बस दिमाग में इतना ही रखिए कि फॉरवर्ड बायस कैसा कनेक्ट करें, रिवर्स बायस कनेक्ट करें. ये पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ले रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है जो आप ट्रांजिस्टर्स ले रहे हो, NPN ले रहे हो या PNP ले रहे हो, उसके हिसाब से आप लोग अपनी सर्किट बना लेते चले जाइए.
ठीक है ना। सो ज्यादा डिटेल में की जरूरत नहीं है, बस जितना आईपी की क्या बोलते हैं नीट के लिए जरूरत है उतना ही लिख रहा हूँ मैं बेसिकली। अगर मैं इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, क्या क्या है देखिए एक बार। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इनपुट क्या क्या है बेटा, बेस इनपुट है और बेस एमिटर का पोटेंशियल। ये देखो, ये बेस करंट इनपुट है और इसका पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट बेस एमिटर, दिस बोथ ऑफ देम आर योर इनपुट। और बेस एमिटर जो है ना कांस्टेंट होता है, इट योर कांस्टेंट ऑफ योर व्हाट, कलेक्टर एंड एमिटर। जो आउटपुट का पोटेंशियल है ना बेटा, दैट शुड बी रिमेनिंग फॉर मी योर कांस्टेंट। यानी अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लिखता हूँ बेसिकली, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बेस करंट एंड VBE, V base emitter at what beta, at your constant potential of your collector and as well as of your emitter। कौन कांस्टेंट है बेटा, आउटपुट कांस्टेंट है। इनपुट में क्या है मेरे पास, बेस करंट है एंड पोटेंशियल क्या है, बेस एंड एज वेल एज ऑफ योर एमिटर। ठीक है ना। इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट में जैसा ग्राफ आता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऐसा कुछ आता है। ये मेरे पास बेस करंट और यहाँ पर पोटेंशियल। जैसे स्विच ऑन हुआ तो करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर जाएगा एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। सो दिस इज योर करंट इट व्हाट बेटा, VCE इसका कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इसका स्लोप ले रहा हूं, ऐसा ऐसा डाल के ले लीजिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी द थीटा। उसका स्लोप कितना हो जाएगा बताइए, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय योर एफ, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर tan थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल टू योर वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे क्या है बेटा मेरे पास, चेंज इन योर बेस करंट होगा डिवाइडेड बाय योर चेंज इन योर बेस एंड एमिटर होगा। अपने को ये मालूम है V इज इक्वल्स टू योर I इंटू योर R। तो I बाई योर V अगर लिख रहा हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1 बाई योर R। ठीक है ना। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इनपुट रेजिस्टेंस, यानी स्लोप विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी बेटा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1 बाई इनपुट रेजिस्टेंस। RI से लिखो या कभी कभी कोई कोई बुक में स्मॉल r से भी लिखता है बेटा, वन एंड द सेम ही होते हैं। पता नहीं, सता रहा है आज। ठीक है, रखो गया था बेटा। बेस करंट और पोटेंशियल आर इनपुट बेटा, एट व्हाट बेटा, एट योर कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर एंड एमिटर। ठीक है ना। इसका अगर मैं ड्रॉ कर लूं, सब कुछ ग्राफ आएगा इसका। वाई एक्सिस पे अपन ले लेते हैं बेस करंट और एक्स एक्सिस पे अपन ले लेते हैं पोटेंशियल। ठीक है। इसका अगर मैं यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, दिस इज स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है ना। तो स्लोप कैसा होगा बेटा इसका, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय योर एफ, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय योर एफ या tan थीटा। tan थीटा मतलब y बाई एक्स, y की जगह क्या है बेटा, चेंज इन बेस करंट है और एक्सिस की जगह चेंज इन पोटेंशियल ऑफ योर बेस एंड एमिटर। सो I by V will be equal to how much बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। So therefore I can write that input resistance will be equal to your delta VBE divided by your delta IB। Important formula बेटा। ठीक है ना। So I can say that resistance will be equal to your input resistance will be equal to 1 by, I can write this one as of your slope of your input characteristics। ऐसा भी लिख सकते।
ठीक है ना। तो ये हो गया इसका इनपुट। अब आउटपुट क्या आएगा ये बताइए, आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ बेटा, डोंट टेक टेंशन। आउटपुट क्या है बेटा, अपने पास कलेक्टर है ना, तो हम लोग ग्राफ किस किस के बारे में ड्रॉ करेंगे, देखो एक बार डायग्राम देख लो। विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ बिटवीन योर कॉमन कलेक्टर एमिटर एंड एज वेल एज ऑफ योर कलेक्टर करंट, isn't it? And keeping what fixed right now, बेस करंट को फिक्स रख के हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, it is the graph drawn between VCE collector emitter and as well as of your IC at fixed base current, which will be remaining for me constant, ठीक है ना। सो दिस इज एन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये दो चीजें अपने को याद रखनी है बेटा। ट्रांजिस्टर्स में जनरली पूछता क्या है बेटा, चाहे कौन सा कॉमन एमिटर हो, कॉमन बेस हो, कॉमन कलेक्टर हो, तो अपने को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होने चाहिए। इनपुट मतलब जो अपन लगा रहे हैं, आउटपुट मतलब जो अपने को निकल रहा है। इनपुट पे क्या क्या है अपने पास, बेस करंट एंड बेस एमिटर का पोटेंशियल का कांस्टेंट रख रहे हैं, आउटपुट का पोटेंशियल कांस्टेंट रख रहे हैं। तो उसमें से अपने को ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Ri is equals to your inverse of your slope of your input characteristics, और मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है ना, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट व्हाट बेटा, ग्राफ ड्रॉन बिटवीन योर, वी आर ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन व्हाट, graph drawn between your potential across your collector emitter and as well as of a collector current by keeping what fixed बेटा, इनपुट करंट को अपन फिक्स रख रहे हैं बेसिकली। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा कुछ बनेगा बेसिकली। यहाँ पर हम लोग लेंगे कलेक्टर करंट जो मिली एम्पियर्स में मेजर करेगा, और यहाँ पर हम लोग लेंगे पोटेंशियल दैट इज योर कॉमन एमिटर के पास, isn't it? तो ग्राफ अपने को ऐसा कुछ दिखाई देगा, isn't it? यानी थोड़ी देर के बाद there will be the flow of your current and this will be the potential of your C. So base current कितना रख रहे हैं कांस्टेंट अपन, base current is equals to 10 माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। आईपी वगैरह के जाते तो और ज्यादा डिटेल में जाते बेटा, ज्यादा जरूरत नहीं है। सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग विद दैट रीजन बेसिकली, बस इतना याद रख लो, दैट्स मोर देन एनफ फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा ड्रॉ करते हैं, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, मैं आपको डिटेल में कराता हूँ। तो फिलहाल तो सिर्फ आप क्या करो कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ये अपने को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत कम इस पे नीट में होते हैं बस, लेकिन रफ आइडिया रखा करो कुछ न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली, ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? No doubt? चलो एक बार मैं रफली इसका रिवीजन करा देता हूँ, देख लीजिए। देखो बेटा, ट्रांजिस्टर्स में अपन ने क्या बोला था, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर्स, वन इज ऑफ योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, अनदर वन इज योर पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो रीजन मीडियम साइज में है, isn't it? That is your emitter, जो हाईली डूप्ड होता है और मॉडरेट इन साइज होता है। ये जो बेस होता है बेसिकली लाइटली डूप्ड होता है एंड वेरी थिन होता है, पी। और ये देखो बहुत ज्यादा है, मॉडरेटली डूप्ड है बट लार्जर इन साइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। What are the uses of the transistors? Means it can be used as what, switch and amplifier. स्विच में ऑन में हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ऑफ में अपन कट ऑफ रीजन बोलते हैं बेसिकली। सो एम्पलीफायर में राइट नाउ क्या होता है बेटा, ऑफ रीजन इज कट ऑफ रीजन होता है और एम्पलीफायर में एक्टिव रीजन हो जाता है बेसिकली, isn't it? And is also used as of your oscillator. और डायग्राम बनाने का तरीका मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, एमिटर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी और रिवर्स बायस, ठीक है ना। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका। सो एमिटर
NPN, यानी P से जाएगा तो एरो मार्क यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया N, ये हो गया P और ये हो गया N। तो एरो मार्क ऊपर, क्योंकि यहाँ से फ्लो होगा करंट, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, इजंट इट। यहाँ पर देखो बेटा बेस कॉमन है, सो यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर P, दिस विल बी इक्वल टू योर N और दिस विल बी इक्वल टू योर P, इसलिए एरो मार्क इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। Is that clear? Now, what are the modes of the transistors? I told you we are having three common modes, beta. One is common base, common emitter, and common collector. ठीक है ना। तो common base configuration में देखो बेटा, base common है, emitter is given for the input, and collector should be forward bias, this should be reverse bias. NPN transistor, ये देखो ये N है, तो N नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। यहाँ देखो बेटा ये N है, ये P है, this is your P, this is your N, and this is your N. N is connected to positive and P is connected to negative. Obviously ये हो गया मेरे पास reverse bias. The emitter current will always be equal to your base current plus of your collector current. ठीक है ना। उसी तरह से NPN transistor में बेटा N should be connected to positive, N should be connected to negative, and P should be connected to positive. So this will be your forward bias. उसी तरह से P should be connected to negative, N should be connected to positive. This will be your reverse bias. ठीक है ना। ये करंट गेन वगैरह का रिलेशन अपन कल की क्लास में कर लेंगे, ये पूरे डायग्राम्स वगैरह के एप्लीकेशंस। तो थोड़े हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, प्योर सिलिकॉन at 500 Kelvin has equal number of your electrons Ne and a number of your hole concentration, that is 1.5. So that means intrinsic number of electrons and number of holes अगर same हो गए मतलब that will be called as of your Ni. Doping by indium increases NH, यानी number of holes कितना increase हुआ, 4.5 into 10 to the power of 22 meter per cube. The doped semiconductor क्या हो सकते हैं, यानी number of holes दे रखा है। You know the formula, Ne into NH will be equal to Ni square, यानी Ne will be equal to Ni square divided by NH. Ni की वैल्यू कितनी है, 1.5 into 10 to the power of 16 whole square divided by number of holes कितना है, 4.5 into 10 to the power of 22. So that is approximately I'm getting 5 into 10 to the power of 9. So 5 into 10 to the power of 9 कौन से ऑप्शन में है बेटा, only first option. So it should be having the P, having the electron concentration of your 5 into 10 to the power of 9. Important question है बेटा, तो थोड़ा दिमाग लगा के करिए एक बार। ठीक है, चलिए ये देखिए बेटा, which of the following statement is false? Pure silicon doped with a trivalent impurities gives the p-type semiconductor. Majority carriers in the n-type semiconductors are your holes. Minority carriers in the p-type semiconductors are electrons. The resistance of the intrinsic semiconductor decreases with increase in temperature. Which of the following statement is false? पूछा basically. Majority charge carriers in your n-type semiconductors are holes. क्या वही होता है क्या? क्या होता है? कोई आंसर दे सकता है चैट बॉक्स में? Pure silicon doped with a trivalent impurities gives a p-type semiconductor. ये करेक्ट है क्या? करेक्ट ही है ना बेटा? Minority charge carriers in the p-type semiconductors are electrons. True. Resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase in your temperature. So B will be the answer. Next one देखो बेटा. In the energy band diagram of a material shown here, the open circles and filled circles denote the holes and electrons respectively. तो material क्या होगा? ये होल से electrons है. An insulator, a metal, N type, a P type. So obviously number of holes are greater than number of electrons. So it should be a P type of your semiconductor. इंसुलेटर तो नहीं हो सकता, मेटल भी नहीं हो सकता, एन टाइप भी नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ होल्स आर मोर। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ द होल्स जनरली, ठीक है ना। ये तो पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम था। हाँ देखो बेटा, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन किसमें होता है बेटा,
The increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is due to what? Forward bias only, reverse bias only, both forward and reverse increase in the forward bias. रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज इन द रिवर्स बायस. 2020 में पूछा था, कितना सिंपल क्वेश्चन था. द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर. द बैरियर पोटेंशियल विल डिपेंड ऑल ऑफ देम बेटा. कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे ले रहे हो आप? बेसिकली अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन. सो डिपेंड्स अपॉन ऑल द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. In an unbiased PN junction, hole diffuses from P region to N region. Unbiased PN junction है मेरे पास, and the holes are diffusing from P region to N region because of what? First option, the attraction of the free electrons of N region, the higher hole concentration in the P region than that of in the N region, the higher concentration of electron in the N region than that in the P region, the potential difference across your PN junction. ये तो unbiased है ना बेटा. तो unbiased में अगर holes diffuse हो रहे हैं from P to your N junction, that means higher hole concentration is in the P region than the N region. उसीलिए वो अपने आप पे जा रहे हैं बेसिकली. ठीक है. Next one. In a PN junction, high potential is at your N side and low potential is at your P side. High potential in PN junction, high potential at P side and low potential is at your N side. P and N both are at the same potential, undetermined. PN junction में high potential at your N side and low potential at your P side. पता है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना बेटा. इस साइड पे मेरे को पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, इस टाइप पे नेगेटिव टर्मिनल रहता है, isn't it? And electric field is from where to where बेटा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस चले गए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पीएन जंक्शन डायोड इज फ्रॉम योर पॉजिटिव टू योर नेगेटिव. सो हाई पोटेंशियल इट इज एट योर एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट योर पी साइड. क्योंकि कंडक्टिविटी हो रहा है ना बेटा, चले जा रहे हैं, इसलिए लो पोटेंशियल हो जाएगा. नेक्स्ट वन. In PN junction diode, change in temperature due to the heating. In a PN junction diode, change in temperature due to heating affects only reverse resistance, affects only forward resistance, does not affect the resistance of the PN junction, and affects the overall VI characteristics of the PN junction. In PN junction diode, change in the temperature due to heating. अगर heat करोगे, it affects the reverse resistance, it affects only the forward resistance, does not affect the resistance of the PN junction. It affects the overall VI characteristics of the PN junction. So the best option will be it affects the overall VI characteristics of the PN junction. क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएंगे बेटा, पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो जाएंगे, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड बायस डायोड? मैंने ऑलरेडी क्लास में करवाया था ये. या नेगेटिव है, -3 है, -4 -3, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, -2 प्लस ये हायर पोटेंशियल, ये +3 है, ये +5 है, तो ये हायर पोटेंशियल, यानी ये हो गया P, ये हो गया नेगेटिव. isn't it? Which one is forward bias बोल रहा है, ये तो रिवर्स बायस हो गया, isn't it? So this one is your reverse biased. यहाँ पर भी देखो ये हो गया रिवर्स बायस और ये भी हो गया रिवर्स बायस. So obviously this is 0, this is -2, ये हाई है, ये लो है, तो obviously this one is forward bias. Next one. The given circuit has two ideal diodes connected as shown in the figure. Ideal diodes बोल रहा है बेटा, यानी जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस. The current flow through the resistance R1 will be equal to how much? Okay, यहाँ पर input potential 10 volt है, यहाँ पर ideal diode है, this is connected to the positive and forward biased है, and this one is यहाँ ये reverse bias है बेटा, क्योंकि this is your N type here and this is your P type. So D1 is your reverse bias, तो ये conduct नहीं करेगा. ये कंडक्ट नहीं करेगा मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट हियर. अगर यहाँ पर करंट ही नहीं है मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट ओनली थ्रू दिस वन. दिस विल बी फॉरवर्ड बायस, D2 विल बी फॉरवर्ड बायस. ठीक है ना. तो R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा? टोटल कितना हो गया? 2 + 2 4. पोटेंशियल कितना हो गया? 10. तो I is equal to V by R. इनपुट पोटेंशियल इज 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी 2.5. नेक्स्ट वन.
Consider the junction diode as an ideal. The value of the current flowing through your A to B will be equal to how much? Okay. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम. यहाँ पर प्लस वोल्ट है, प्लस 4 है, यहाँ पर -5. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? 10 वोल्ट. पोटेंशियल अप्लाइड. रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 1000. तो करंट कितना है? I is equals to V by R. V is given how much for me? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा पूरा. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 डिवाइडेड बाय R. R की वैल्यू कितनी है? 1000. Isn't it? This is 10 divided by your 1000. ये वाला चला गया. So this is your 1 by 100. इसीलिए अपन को 10 पावर -1. ठीक है. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R. ये diode देखो, this D, this is a P and this is your N. P is connected to positive and N is connected to negative. Obviously, this is a forward bias, तो conduct करेगा. चलो, in the given figure, diode D is connected to an external resistance R. R की value है 100 ohms and EMF of 3.5 volt. यानी इसके potential है 3.5 volt. फिर barrier potential is खराब हो जाता, पानी लगाए तो. The barrier potential developed across the diode is 0.5. यानी यहाँ पर potential दे रखा है diode को 0.5 is barrier. Current through the circuit will be equal to how much? Very good question बेटा. यहाँ पर देखो करंट निकालने का तरीका V by R. यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है? 3.5 माइनस दिस 0.5 बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल दे रखा 0.5. ये बैरियर पोटेंशियल है, ये इसको ओवरकम करना चाहिए, तो इसलिए 3.5 माइनस 0.5 दैट मींस 3 divided by resistance 100. So that is 30 milliamp. Yes. ठीक है. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला. In a PNP junction, a square input signal of 10 volt is applied as shown. Okay, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रीड करेगा, ये नेगेटिव रीड नहीं करेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया. ये लोड रेजिस्टेंस. Then output across your load resistance will be equal to your how much? So only this one. ये रीड करे ना बट ये रीड नहीं करेगा. तो ये आउटपुट आएगा, ये तो रीड नहीं करेगा, ये -10 ये भी रीड नहीं करेगा, ये +10 ये रीड नहीं करेगा. ओनली 5 वोल्ट विल बी voted. So ये दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट वन. Two ideal diodes are connected to a battery as shown in the figure. Okay, चलो पहले कौन सा फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स देख लेते हैं. ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया N टाइप और ये हो गया P और ये हो गया P और ये हो गया N. N is connected to positive, तो ये हो गया रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा, ऊपर वाला ही कंडक्ट करेगा. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट ओनली इन दिस वन, बीच में करंट नहीं होगा. तो D1 इज राइट नाउ फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस. तो रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 10 ohms. पोटेंशियल अप्लाइड कितना है? 5 यानी I इज इक्वल टू V by R, दैट मींस 0.5. ठीक है. चलो, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द PN जंक्शन, the positive terminal of the battery is connected to the P type and depletion region becomes thick. Positive terminal of the battery is connected to P type and depletion region becomes thick. Thick नहीं बनेगा, वो thin बनेगा. This will be wrong. The positive terminal of the battery is connected to N side and depletion region becomes thin. No, this will become for me wide. The positive terminal of the battery is connected to N type. The depletion region becomes thick. अगर positive terminal is connected to your N type, क्या हो जाएगा बेटा? Reverse bias. Positive terminal of your battery is connected to your P type and depletion region becomes very thin. Obviously, it will become for me thin. Positive terminal of the battery is connected to N type, N side. Depletion region is becoming thick बोल रहा है. होगा क्या? नहीं ना? So what will be the answer? अगर positive terminal of your battery is connected to the P side, then the depletion region will become for me thin. This will be correct. Next one. ये तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन था. In the following figure, the diode which are forward biased are +5, +10. This is your P, this is your N. P is connected higher potential forward biased. This one is your P, this one is your N. P is connected to -10, N is connected to 0. This will be your reverse biased. And -2 ये P है और ये N है. P is connected to -5 higher potential. -5 is higher than -12. So forward biased.
This 0 volt है और ये plus ये p type semiconductor n type semiconductor n is having right hand, तो ये reverse bias. In the following figure the diodes which are forward bias कौन कौन है, b है और d है. forward bias कौन कौन है, ये है and forward bias c है, a and c, यानी c and a will be the answer. Next one. Application of a forward bias to a PN junction. Widens the depletion region, increases the potential difference across the depletion zone, increase the number of donuts on the n side, decreases the electric field in the depletion region. Obviously, in forward bias, depletion layer will be decreasing, so the electric field will be decreased. So D will be the answer. Direct question. Of the diode shown in the following figure, which one is reverse? Direct question. I hope everyone can do this one. -12, -5. ये higher है, lower है, तो forward bias है. यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो ये p टाइप है और ये n टाइप है, तो दिस विल बी योर फॉरवर्ड बायस. यहाँ पर देखो ये 0 वोल्ट है और ये हो गया +5, यानी नेगेटिव कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, तो रिवर्स बायस. सो रिवर्स बायस बोल रहा है तो ऑब्वियसली बी, अब ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीपल नहीं होगा. चलो, रिवर्स बायस अप्लाई टू ए जंक्शन डायोड, lowers the potential barrier, raises the potential barrier, increases the majority charge carriers, increases the minority charge carriers. अगर रिवर्स बायस में है तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा तो इट विल राइज द बैरियर पोटेंशियल, है कि नहीं. ये देखो ये पीएन जंक्शन था, ये पी टाइप ये एन टाइप, इस रिवर्स बायस में बोल रहा है, यानी अगर ये पी टाइप है ये एन टाइप है, अगर ये दिस वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो डिप्लेशन लेयर यहाँ पर कहीं पर आएगा. अगर डिप्लेशन लेयर यहाँ पर आ गया तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. Barrier potential of the PN junction diode does not depend on, can anyone tell me? Barrier potential of a PN junction diode does not depend on diode design, temperature, forward bias, doping intensity. Obviously temperature पे depend करेगा, isn't it? Barrier potential of your PN junction diode does not बोल रहा है, it will depend on temperature, it will depend on forward bias, it also depend upon doping. It will not depend upon the design, कि आप कैसे डिजाइन कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं होगा बैरियर पोटेंशियल. Next one. For the given circuit of the PN junction diode, which is correct? Okay, ये diode है ideal, ये potential and यहाँ पर potential. In the forward bias, the voltage across R is 12 volt. Open है ना बेटा? So in forward bias, the voltage R is right now for me volt V. Reverse bias, the voltage R is your V. Forward bias, the voltage of the R is 2V. In reverse bias, the voltage of R is